Hello and welcome, my dear students. Chapter is the microbes in human welfare, and the topic for the day is microbes in industrial products. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का क्या यूज़ है, कैसा यूज़ है, यही आज का टॉपिक है। 3 कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला है यूज ऑफ माइक्रोब्स इन फर्मेंटेड बेवरेजेस। बेवरेजेस को, जो फर्मेंटेड बेवरेजेस हैं, यानी बेवरेजेस को प्रोड्यूस करने में इंडस्ट्रियल स्केल पे हम माइक्रोब्स का यूज कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक्स। इसके बारे में तो बूमिंग चल रही है, सब जानते हैं, एंटीबायोटिक्स। और तीसरा है केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बेवरेजेस हो, एंटीबायोटिक्स हो या केमिकल, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हो, सबको क्या करना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की तरह यूज करना है। यानी इंडस्ट्रियल स्केल पे, यानी बहुत ही कॉमर्शियल लार्ज स्केल पे हमें इन चीज़ों को प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्ट्स हमको चाहिए। इसके लिए माइक्रोब्स भी बहुत लार्ज प्रोडक्ट्स पे चाहिए होंगे। वी रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स एंड फॉर दैट पर्पज we use large vessels, and that vessels are fermenters. Fermentation process, we use fermenters. So these are the large vessels in which microbes grow in a very optimal condition, in a very good manner, and they produce a large amount of desired product, what we actually want. So Saccharomyces cerevisiae is the yeast, what you know, the common yeast. Okay. Now Saccharomyces cerevisiae is used commercially in baker's industry for the production of bun and bread. For the production of bun and bread. तो इसको baker's yeast भी कहते हैं. Cerevisiae is also used for the fermentation of several fruit juices and several cereals, grains, malts, etc. So this is also known as what? Brewer's yeast, baker's yeast as well as brewer's yeast. डिपेंड करता है कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस के बाद जो ड्रिंक प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है, वो कैसे बन रहा है, वो कैसी वाइन एंड बियर। जो वाइन और बियर होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन। इसके अलावा बाकी जो भी आप पढ़ते हो, विस्की है, रम है, विस्की, रम एटसेट्रा, ये सब डिस्टिलेशन के बाद बनते हैं। और डिस्टिलेशन में भी लेयर्स होती हैं, मतलब कैसा डिस्टिलेशन और प्रोसेसिंग हुआ। It means on the basis of processing we can divide the beverages into 2 different categories. One having original broth condition, that is undistillated part, and the other is the distilled part. So undistillated वाले कौन कौन से होते हैं? Undistillated one are wine and beer, other are distillated. Now fruit juices have less than 0.1% of the alcoholic content, whereas low alcohol beer have 0.5 to 1.2% of the alcoholic content. Beer have normally 2 to 12%. Usually it is 4 to 6 or 4 to 8, but 2 to 12% it is what? Beer. Barley wine contains, it is also known as strong ale or strong ale. Okay. Barley wine contains 8% to 15% of the alcoholic content, whereas wine, distilled one or other undistilled one are 9 to 16%. Now next some are the purely distilled one. So vodka contains 35 to 45. Someone says that it also contains approximately 95% of the alcohol. 95% of the alcohol is near about the absolute point. So I don't think so, but 35 to 45% of the alcoholic content. Brandy also have 35% to 60% of the alcoholic content, whereas rum contains
37.5 to 80% of the alcoholic content, and whiskey contains 40% to the 68% of the alcoholic content, whereas Scotch contains 40% to 63.5% of the alcoholic content. So these are the beverages and their alcoholic contents present in them. Now the next part is what? Antibiotics. So we are now moving on antibiotics. Simply anti means against. ये ग्रीक वर्ड्स होते हैं these are. Anti means against. Biotics means life. So antibiotics are those chemicals, even those microorganisms which act against some other life forms. Simply all those chemicals or microorganisms which act against the other life forms are antibiotics. This is the word which is actually given by Alexander Fleming. So most notable person. Why? During the Second World War, actually Alexander Fleming worked on a bacteria. He worked on a bacteria named as Staphylococci. Okay. But he observed that in a culture plate, in a particular culture plate, no staphylococci, no bacteria grown, no bacteria there in the plate. He became amazed how it happens. No bacteria is here. So accidentally he investigated the plate and found some of the mycelium. So notatum, that is Penicillium notatum. Penicillium notatum. So Penicillium notatum releases some chemicals that actually kill the staphylococci, kill the bacteria. तो यहीं से वर्ड आता है एंटीबायोटिक्स. मीन्स पेनिसिलियम नोटेटम ने जो केमिकल रिलीज किया, केमिकल दैट kills the staphylococci, and this is what antibiotics. Is it clear? Fleming ने भले ही इस्टेब्लिश कर दिया था एंटीबायोटिक वर्ड को और एंटीबायोटिक के बारे में एक्सीडेंटली डिस्कवर कर दिया था, बट अर्नेस्ट चैंग और हार्वर्ड फ्लोरे थे जिन्होंने इसको पूरी तरह से इस्टेब्लिश किया, एंटीबायोटिक की एक्टिविटी को रियल में इस्टेब्लिश किया. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय उन्होंने एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया अमेरिकन सोल्जर्स को ठीक करने में, और वहाँ से फिर ये एकदम से बूमिंग हुआ. इसके लिए फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरे को नोबेल प्राइज 1945 का भी दिया गया था. एंटीबायोटिक्स आर ग्रेटली मॉडिफाइड टू ट्रीट प्लेग, whooping cough and some other diseases like diphtheria, etc. So, okay. So, Aspergillus niger, it is a fungus. It produces citric acid. Acetobacter aceti, it is a bacterium that produces acetic acid. Clostridium botulicum is a bacteria that produces butyric acid. And Lactobacillus is another bacteria that produces lactic acid. Yeast, that is Saccharomyces cerevisiae, is used for the production of ethanol. Some of the microbes are also used for the production of enzymes at commercial scale. So, lipase are used in the detergent formulations and helpful in removing oily stains from the laundry. Bottled juices are clarified by the use of pectinase and proteases. Now, streptokinase produced by a bacterium Streptococcus and modified by genetic engineering, and it is used in clot buster for removing the clot from the blood vessels of the patients who have undergone myocardial infection leading to the heart attack.
Cyclosporin A is used in immunosuppressive activities, and it is used during the organ transplantation, and this is produced by the fungus Trichoderma polysporum. इसे बहुत याद कर लीजिए, नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है. Trichoderma polysporum. Stains produced by the yeast Meniscus purpureus have been commercialized as blood cholesterol lowering agent. It acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol. So this is the use of microorganisms in industry. तो इस तरह से हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.